Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3, Human Health, and today I will deliver its third lecture. So my dear students, in today's lecture we will discuss about the methods of preventing common diseases. So my dear students, before moving on towards our main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer them. What are the modes of transmission of diseases? They are when you shake hands, when your hands are dirty, आपके हाथ गंदे हैं और आप किसी को और को टच करते हैं to a healthy person और आप उसको भी जो है वो germs जो है आपसे उस तक ट्रांसफर हो जाते हैं. And other things are जब आप ओपन फूड खाते हैं which is not covered और उसको फिर आप कंज्यूम कर लेते हैं तो इस तरीके से भी जो जर्म्स हैं फ्लाइज और इंसेक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर बैठती हैं जिसकी वजह से यू गेट इल. Another thing is when you buy food from street vendors. ऐसा फूड भी कंटेमिनेटेड होता है, जर्म्स होते हैं उसके अंदर और इस तरीके से आप जो है वो बीमार हो जाते हैं और आपके अंदर जो है मुख्तलिफ जर्म्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं. Another thing is when you touch different objects, जैसे कि आप टेबल को हाथ लगाएं, डोर लॉक्स को हाथ लगाएं, जिनको frequently different लोगों ने टच किया होता है, इस तरीके से भी आप में germs जो हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं. Now, my dear students, let's start the lecture with an ice-breaking activity. Look at these. I will show you some pictures. You have to look at them very carefully, but let's first look at the instructions. Show given pictures to the students and ask them to present before the class that what are the ways to prevent from diseases. So my dear students, अब मैं आपको कुछ pictures दिखाऊंगी. You have to look at them very carefully and then you have to present it in front of the class कि कैसे आप diseases से बच सकते हैं. In the previous lecture, we discussed about the modes of transmission of germs. और अब हम उन germs से और diseases से कैसे अपने आप को protect कर सकते हैं. You have to present that in front of the class. So look at the pictures. So my dear students, look at them very carefully. Pause the video and then present in front of the class that how you can prevent yourself from different diseases and germs. So my dear students, how we can prevent ourselves from the germs? आपको अगर एक दूसरे से 6 feet का distance रखना चाहिए. If you are not feeling well, you have cough, you have flu, you have fever, you are not feeling well, keep distance of 6 feet from the healthy person ताकि आप उनको germs transfer ना करें. Wear a mask and wash your hands very frequently. इसके अलावा कभी भी बाहर से open food लेके street vendors से मत खाएं. So that is how you can keep yourself or prevent yourself from diseases and germs. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to explain some methods of preventing common diseases and their transmission. For example, vaccination, washing hands and wearing mask. So my dear students, आज के लेक्चर में आप अपने आप को कैसे डिजीजेस से बचा सकते हैं हम इस बात के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे. So my dear students, let's move forward in today's lesson. Methods of preventing common diseases will be discussed. So let's quickly look at the Islamic perspective. And Allah shall heal the hearts of believers. So my dear students, Allah ताला है जिनके पास हर बीमारी के लिए शफा भी है. तो अगर आप बीमार हो जाते हैं तो हमें साथ साथ मेडिसिन के दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि हमें जो है अल्लाह ताला ठीक कर दें जल्दी से और हमें डिफरेंट डिजीजेस से बचाएं भी, प्रोटेक्ट भी करें. So my dear students, let's move on towards the pre-reading question. Did you follow any precautions to avoid germs and diseases? क्या आप germs से अपने आप को बचाने के लिए कोई precautions लेते हैं? कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं? Okay, you keep a distance of 6 feet, you wash your hands, and when you get ill, you take different medicines. So that is how we can protect ourselves, prevent ourselves from different diseases. Okay, my dear students, now is the time for reading. Wear a mask, vaccination. So my dear students, quickly open methods of preventing common diseases in your science 4 books. I hope everybody has opened the books. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Methods of preventing common diseases.
As we have learned about the transmission mode of different diseases, we can avoid germs and thus minimize the risk of infection. We can protect ourselves with a few elementary precautions, such as we should wash our hands with soap and warm water for at least 20 seconds before and after eating, after using toilets, etc. So my dear students, first and foremost thing, आपको अपने hands को frequently wash करना चाहिए, जल्दी जल्दी धोना चाहिए. जल्दी का मतलब ये नहीं कि quickly just wash them, यानी कि जल्दी से आपको जब भी आप खेल के आए, खाना खाएं, खाने से पहले, खाने के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद, जब आप डिफरेंट चीजों को टच करते हैं, तब भी यू मस्ट वॉश योर हैंड. गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से हाथों को धोएं फॉर 20 सेकेंड. नेक्स्ट, यूज हैंड सैनिटाइजर इन केस ऑफ non-availability of water. So my dear students, when you are outside and you want to eat something and you cannot find water, तो तब आप अपने हाथों को कैसे धो सकते हैं? You can use a hand sanitizer. In this way, though these hand sanitizers are antibacterial, germ free करते हैं आपके hands को और clean कर देते हैं. Next, we should do proper vaccination. Different diseases have different vaccines. For example, measles, mumps, polio, COVID-19, hepatitis, etc. Vaccination develops immunity against diseases. So my dear students, हम different viral जो diseases होती हैं उनसे हम अपने आप को कैसे protect कर सकते हैं? Through vaccinations. Vaccination के बारे में हम already पढ़ चुके हैं कि what are different vaccinations. Vaccinations जो है ये आपको बचाती हैं बीमारियों से, आपकी बॉडी को इम्यून कर देती हैं. Recently pandemic था COVID-19. सो इसके बारे में आपने सुना होगा कि शॉट्स ले रहे थे, वैक्सीनेशन के शॉट्स लिए, इंजेक्शंस लगे. एडल्ट्स को यूजुअली घर में इंजेक्शंस लगे थे. दीज वर द वैक्सीनेशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोरोना वायरस. वी शुड वेयर अ मास्क व्हेनेवर वी गो आउट ऑफ होम एंड इन पब्लिक प्लेसेस. सो टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम जर्म्स, क्योंकि जर्म्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. सो ये हमारी ब्रीदिंग के थ्रू, हमारे माउथ से या नेजल नोज से जो है they can enter into our body. So we must always wear a mask whenever we go outside. So ये हमें pollution से, germs से बचाता है. We should cover our mouths while sneezing and coughing. Very important thing. जब भी आपको flu या cough है, so when you cough or you sneeze, यानी कि आपको छींक आए या खांसी आए, so you must cover your mouth with your elbow or with your hands and quickly wash your hands or throw away the tissue paper, properly dispose it off. Next, we should sanitize doorknobs and other commonly used objects at home and school. A very important thing, जो frequently चीजें जिनको हम हाथ लगाते हैं जैसे कि doorknobs और handles होते हैं, हमें उनको sanitize करना चाहिए ताकि germs जो हैं जो उनके ऊपर लगे हुए हैं वो हमारी body में transfer ना हो. So my dear students, now is time for a class activity. Make groups of 4 or 5 students in each group. Instruct each group to prepare a chart about any communicable diseases along with its preventive measures. Display one of the chart in your classroom. Donate the extra one to other classes to create awareness among others. So my dear students, अभी हमने modes of transmission भी पढ़ लिए, how we can prevent ourselves from diseases हमने ये भी पढ़ लिया. हमने communicable और non-communicable diseases के बारे में भी पढ़ा है. Communicable diseases, quickly just recap it, recall it. Communicable diseases वो होती हैं जो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, या डिफरेंट हवा से या डिफरेंट जगहों को जब आप टच करते हैं, दोज विच हैव जर्म्स, तो वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर होके आपको बीमार कर देते हैं. तो सच वायरसेस, बैक्टीरियाज आर कम्युनिकेबल, आर द कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो अब आपको ऐसी डिजीजेस के ऊपर, कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर एक चार्ट प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ योर क्लास फेलोज एंड देन प्रेजेंट इट इन योर क्लास, एंड ऑल्सो for awareness, give it to the other students or other classes also. Pause the video and quickly make this chart. I hope you have done it. Now we will move forward. So my dear students, COVID-19 is a communicable disease. ठीक है, अभी हम क्योंकि communicable diseases के बारे में बात कर रहे थे, आपने चार्ट भी बनाया, तो let's quickly recap it. देखते हैं कि आपने कितना अच्छा चार्ट बनाया. So COVID-19 जो है ये communicable disease है और इसके preventive measures क्या है? We must wash our hands, sanitize them. इसके अलावा cover your mouth and nose whenever you are coughing and sneezing. Eat healthy and hygienic food. Drink lots and lots of water and it must be clean.
sanitize the doorknobs and frequently the places which you touch, and clean commonly used objects. So my dear students, now is the time for evaluation. So what precautions we can use to avoid germs? Very good. Wash your hands, sanitize commonly used objects, cover up your face with mask, and keep a distance of 6 feet. So these are some precautions. That's how you can keep yourself away from diseases. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and your class, and then we will move forward. Unscramble the sentences. So these are also some jumbled sentences. You have to put them in the right order, write them in the right order. Wash his hands, my brother, for at least 20 seconds. So how you will write it? My brother washes his hands for at least 20 seconds. So this is how you will complete the rest of the sentences. Pause the video and complete it. I hope you have done it. Now let's move forward. Circle the good habits, cross out the bad ones. So my dear students, here are some habits given. So you have to circle the ones which are good and cross the ones, put a cross on the top, not on the whole picture. Cross the ones which are bad habits or which are not good for your health. So quickly finish it and submit your worksheet to your teacher. I hope you have done it. Now we will move forward. So let's quickly note down the homework. So for homework, you will complete project number 2, plan and conduct an interview with a physician to discuss about healthy lifestyle. Prepare your questionnaire before meeting, conclude your meeting, and present in form of a report. So my dear students, for this project, what you need to do is, with the help of your father or your mother, go to a physician nearby your house और उनसे आप एक questionnaire prepare करें और आप उनसे questioning करें about healthy lifestyle, how you can maintain a healthy lifestyle. So in this way आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपनी health को better बना सकते हैं. So my dear students, perform the project 2 with the help of your parents. और अगर आपके पास physician available नहीं है, आप नहीं जा सकते, so I have called upon my friend, she is a physician, और वो आपको healthy lifestyle के बारे में brief करेंगी. And for your help and for your ease, मैंने questionnaire जो है, this is under the description box, description box below this video. So you can download this questionnaire from there, and also the report is also with this questionnaire. So my dear students, I would like to call upon Ma'am Aisha. Please. अस्सलाम वालेकुम. जी मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र है जी बताइए आप क्या क्वेश्चंस लेके आई हैं मेरे लिए? मैम मैं आपके लिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस लेके आई हूँ अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल. ओके, दैट इज वंडरफुल. So you have to brief the audience, my little audience, and you have to tell them about a healthy lifestyle. Okay, that's nice. So I have my questions here, one by one I'll ask you, and please आप इनको briefly जो है वो बताते जाएं कि कैसे जो है ये अपने आप को बचा सकते हैं diseases से और अपने आप को healthy रख सकते हैं. All right, sure, let's start. Okay, what is a healthy lifestyle? A healthy lifestyle means that when we eat, sleep and take care of ourselves, that is called a healthy lifestyle. प्यारे बच्चों, अगर आपको आपकी मामा कहती है कि आपने अच्छा खाना खाना है, साफ सुथरा लिबास पहनना है, अपने हाथ धोने हैं, टीचर भी आपको ये रिकमेंडेशंस दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वी ऑल केयर फॉर यू. तो आपने खुद अपना ख्याल रखना है और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है जो आपकी टीचर और आपके पेरेंट्स आपको बता रहे हैं. So I say so we'll unveil that what is including in a healthy lifestyle, जिसमें स्लीप आता है, जिसमें आपकी हाइजीन आती है, आपका खाने पीने का स्टाइल आता है, आपका स्लीप पैटर्न आता है, and how you perform your regular duties of the day. Thank you so much, ma'am. Now, how important is our diet? जी, diet is your 95% of energy which you consume the entire day while you're awake and doing different activities. तो डाइट अगर आपकी अच्छी होगी तो ही आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं और आपके तमाम ऑर्गन्स का जो परफॉर्मेंस है, जिससे आपको एक ऑप्टिमम एनर्जी लेवल चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपको मिलती है. इसलिए जब आप जंक फूड या कोई ऐसा फूड खाते हैं जिसमें टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, बहुत स्पाइसी भी होता है, बहुत स्वीट भी होता है, but that is good for the tongue only, it is not good for your tummy, and if your tummy is not happy, it will not give good energy to the body.
So very nice, ma'am. So see, avoid the junk food and eat healthy. So which lifestyle habits contribute to an illness or unhealthy lifestyle? Well, eating junk food, sitting in front of the TV screen and watching a lot of cartoons, not sleeping on time, not drinking milk, not washing your hands, and not taking your care at on different places when you're in a public place. तो जो आपको अपनी सेफ्टी के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने हाथ धोने हैं, अगर आपके पास कोई स्नीज कर रहा है तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अगर आपको स्नीजिंग आ रही है तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तमाम चीज इंक्लूड करेंगी तो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा और आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकेंगे फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस अराउंड यू. Okay. So what are the best ways to avoid getting sick? बच्चे बहुत आजकल बीमार हो जाते हैं, तो ये कैसे बचा सकते हैं अपने आप को? सबसे पहले तो बच्चों आपने ये एहतियात करनी है कि आपको इस वक्त स्कूल में, घर में, जहाँ पे भी कोई एडल्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, हेल्दी कैसे रहना है, उसमें जो जो चीजें खासतौर पे आपके लेसन में जो टीचर ने आपको मेंशन की हैं, वो 100% जब तक आप अपनी आदत का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आप ऑफ एंड ऑन सिक होते रहेंगे और उसके चांसेस ज्यादा हैं. क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत सुपर फास्ट होता है, वो जल्दी से जर्म कैच भी कर लेता है. लेकिन अगर आप एहतियात करेंगे तो जर्म से आप बच भी जाएंगे. और खुदा न खास्ता अगर आपको थोड़ी बहुत डिजीज कोई लग रही है, कोई स्नीजिंग, कॉफिंग आ रही है, फीवर आ रहा है, तो उसके लिए आपने फौरन से पहले किसी अच्छे से डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, जो वो मेडिकेशन दे वो लेनी है. टाइम पे प्रॉपर स्लीप, डाइट, वाटर, जो भी आपको वो रिकमेंड करेंगे आपने जरूर करना है. देन यू विल गेट बैक सून healthy and fit. So these are some very important points to note. So ma'am, now please tell me how important is a balanced diet? क्योंकि बच्चों को ये तो पता है कि healthy food कौन से हैं, but they don't know much about healthy diet. So we are discussing it in this chapter also. So please focus on Balanced diet. yes, importance of it. बैलेंस डाइट का मतलब ये है बच्चों कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी खाने पीने की अशिया अपने माहौल में दी है, हर किसी में कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के लिए है. फॉर एग्जाम्पल, जो वाइट आइटम्स हैं जैसे बनाना है, मिल्क है, एग है, बटर है, ये सारा आपके बोन्स को, बॉडी के जो इनसाइड बोन्स है इंक्लूडिंग योर टीथ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह सिट्रस फ्रूट जो है, यानी जूसी फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, मैंगो, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स इंक्लूड करते हैं उन वाइटामिन्स के जो आपको डिजीजेस से दूर रखता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है. सिमिलरली व्हेन यू कंज्यूम स्पिनच, यू कंज्यूम पोटैटोज, देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर योर टमी एंड अ गुड ब्लड लेवल इन योर बॉडी. तो जब आप हर चीज को उसके बैलेंस के साथ जरूर खाएंगे, देन यू विल गेट बेटर. बट इफ यू आर गोइंग टू स्किप सम फूड्स कि इसका मुझे टेस्ट नहीं पसंद, इसकी शक्ल नहीं पसंद, इसका कलर नहीं अच्छा, आई डोंट लाइक इट, then what will happen, your body will be deprived. उसको वो चीजें मिलेंगी नहीं जो उधर से है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई आप कहते हैं मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता, तो बनाना इज गुड फॉर योर टमी, फॉर योर मैग्नीशियम लेवल्स, एंड बनानास मेक यू हैप्पी. No wonder why monkeys are happy in the jungle, because they're eating bananas all the time. Yes. So do eat bananas. They're good for your bones, body, and your stomach. Thank you so much. Okay. Now let's come towards the exercise. क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल टीवी, मोबाइल, कार्टून्स, गेमिंग, indoor activities की तरफ they are more towards it. So what is physical exercise? For your body needs to move. अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को दो मेन एक्टिविटीज के लिए बनाया है, either to stand and walk or lay down and sleep and rest. तो इन दोनों एक्टिविटीज को हम जब अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, ताकि हमारी तमाम बॉडी के मसल्स जो हैं जिनको हम मूव करते हैं. कभी आपने बच्चों अपने मसल्स को फील किया? व्हेन यू मूव योर आर्म्स एंड व्हेन यू मूव योर लेग्स, तो ये जो मसल मूवमेंट है ये हेल्प करती है आपके बोन्स के और आपके स्ट्रक्चर को मूव करने के लिए. तो जब आप ज्यादा देर के लिए बैठेंगे या टीवी के आगे या किसी भी ऐसी जगह पे, तो आपके जो मसल्स है जिनको आदत है, जिनको अल्लाह ने बनाया है मूव करने के लिए, वो स्टेल होते चले जाएंगे, वो जो फैट चढ़ता जाएगा और उसके बाद फिर आपको थकावट फील होगी. तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर रखें. इवन अपने घर में बड़ों से कहें कि वो भी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है मटेरियल वो यूज करें, लेकिन वॉक को अपनी हैबिट का हिस्सा बनाएं, एक्सरसाइज को, सो दैट यू कैन स्टे हेल्दी. Yes, because it keeps you active and strong. Yes, it does. So my dear student, ma'am, kindly please tell me that how often do we need to exercise? Well, every day, probably for children it is all the time, they have to have activity, but for adults they can have it 3 to 4 times a week. Yes, okay. Okay, do we need to go for regular medical checkups, and why? Yes, because if God forbid, if something is going wrong inside your body, or if something is there which is going to cause you trouble in the longer run, और अगर कोई आप ऐसी डाइट ले रहे हैं
या आपने लेनी शुरू की है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी रीजन हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब करे आफ्टर सम टाइम. सो व्हेन यू गो फॉर अ रेगुलर चेकअप, आपके डॉक्टर ने आपके पास अपना रिकॉर्ड रखा होता है कि एवरी 6 months या एवरी 4 months इफ यू विजिट, तो वो बता सकते हैं एग्जामिन करके कि देयर इज समथिंग गोइंग टू go wrong, so please start taking precautions and take care of yourself. Okay, another very important thing, ma'am, क्योंकि बच्चे जो हैं वो brush avoid कर जाते हैं. Yes. So, what are some of the causes of dental and oral diseases? It is you when you don't brush your teeth and you eat sweet, तो क्या होता है आपके teeth के ऊपर एक layer आ जाती है sweet की. And when you don't brush your teeth and you sleep, तो क्या होता है थोड़े दिनों के बाद आपके दांत में दर्द होता है. आपको पता है दर्द की वजह क्यों है? तो जो ब्लैक सा आपके दांत के ऊपर कैविटी बन जाती है, that start hurting, it becomes a hole in your teeth, and then you are unable to eat, and those germs inside your mouth, they hurt, and it is very, very painful to go to a dentist. So please clean your teeth twice a day, in the morning and before going to bed. Because once your good teeth are gone, they are Yes. gone forever. Yes. So, what should be done to avoid these diseases? Take care of yourself, keep your environment clean, keep your hands clean, make sure that when you are coming inside the house from some activity outside, wash your hands first. If you need to take a shower regularly, use soap. And one more thing, when you're using sanitizers outside the house or where there is no available water around you, then make sure the sanitizer you are applying are using all over your hands must dry first properly and then you eat. If you still have sanitizer, although it's a chemical on your hands, you might be eating that chemical with you. So पहले इनको हाथ को मुकम्मल तौर पे खुश्क होने दें और उसके बाद फिर आप कोई खाने वाली चीज खाएं. That would be a recommendation. Yes, thank you so much, ma'am. Last question. What are the effects of consuming junk food? Again and again, we are focusing कि healthy diet लें. So junk food consume करने से क्या effect हो जाता है बच्चों की health Your पे? stomach will hurt you, so first of all. Second, your teeth are going to go rotten, वो दांत खराब होने लग जाएंगे. Muscles जिनको healthy food का इंतजार है कि जी हमारे लिए अच्छा खाना आ रहा है, meat is going to go strong, वो weak होने लग जाएंगे. आपको चलते चलते दौड़ते दौड़ते सांस चढ़ेगा, आपके सर में दर्द रहेगा, आपकी eyesight weak हो जाएगी, and the list goes on and on. So अपनी healthy lifestyle को अपने life का हिस्सा थ्रू आउट बनाएं, अपने घर में, अपने स्कूल में जो है वो घर से लंच लेके जाएं. कोशिश करें कि जंक फूड को जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें. अपनी हेल्थ का ख्याल रखें because you have to take care of yourself. Yes. That is very important. Thank you so much, ma'am. It was very informative and I hope the kids have enjoyed it a lot. Thank you so much. Take care. Thank you so much. Okay, my dear students, so this was it. I just called the physician and I hope you have enjoyed it. So my dear students, now is the time to complete the report. So for the report, आपने जैसे डाउनलोड किया है क्वेश्चनएयर को, underneath this questionnaire there is a report. So there are also options given with each statement. So take the correct option. So this is your homework. You will complete this report at your homes and then submit to your teacher. So my dear students, now is the time for wrap up. So what have we learned today? Wash your hands properly before and after meal. Wear mask and do vaccination properly. Sanitize your hands. Sanitize doorknobs and commonly used objects. Eat healthy and hygienic food and drink clean water. So my dear students, I hope you have learned a lot of good things and good habits from today's lecture. Keep yourself safe. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah.